Good morning, students. Today we are going to discuss with chapter 11. The name of the chapter is Photoelectric Effect and Dual Nature of Matter and Radiation. First of all, we focus on the photoelectric effect, then we will go to the topic dual nature of matter and radiation. So we are beginning with the topics. This is the list of topics that we are going to discuss. Those topics are there listed as it is coming in the exam. So you have to be focused on these topics only. Davison and Zermach experiment you can skip for this year. First of all, the topic is about the photons. What photon actually is. As in the real life, we comes to know about that there is a photon showers going on from the from the sun. जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की तो यूनिवर्स से डायरेक्टली आपके फोटोन्स का शॉवर होता रहता है तो उसको फोटोन शॉवर कहते हैं. एक्चुअली दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ light which is we receiving from the sun. This is comes in a form of packet. So the photons are the packets or the bundle of energy that is called photons. So photon is nothing but the packet of energy or the bundle of energy. The energy of each photon is calculated using the formula energy E is equal to H into mu, where H is the Planck's constant and mu is the frequency of the radiation or the photons. We can also write it as H is equal to Hc divided by lambda, where c is the speed of light in vacuum or air and lambda is the wavelength of the incident radiation. Now, there are some properties of photons, and basically a question of 1 marks can be asked from these properties. Following are the properties. The first one is the photons travels at a speed of light in vacuum, and you all know the velocity of light is nothing but 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now the next point is here, it has zero rest mass, that is the photon cannot exist at rest. Means when the velocity of the photon is zero, we can consider its rest mass to be zero. The kinetic mass of a photon can be calculated using the formula that energy mass relation. If you remember, the Einstein formula is there which relate energy to the mass, that is E is equal to mc square. Using that formula we can calculate the kinetic mass of the photon, and for this we have m equals to capital E divided by c square. और if we place the value of c, E की वैल्यू जो आपकी लास्ट स्लाइड पे हमने चेक की थी, that is h into c by lambda. If we use that particular formula, then we have the new one as h divided by c lambda. Now the next point is point number 4, the momentum of photon. So as you remember, the momentum is nothing but the mass into velocity component. Using that relation also we can find in term of Planck's constant, that is P is equal to h by lambda. The fifth point is there, photons travels in a straight line. Photons travels in a straight line. That is a basic assumption that the light is light moves in a rectilinear propagation way. The next point is point number 6. The energy of photons depends upon the frequency of photons. So the energy of photons does not change when the photon travels from one medium to another medium. This is one of the points, that when the light changes one medium from one medium to another medium, when the light changes or goes into second medium, we can say the case of refraction, the energy is not going to be changed because the energy depend upon the frequency, and frequency is the only factor which remains consistent when the rays is moving from one medium to another medium. Therefore the energy is not going to be changed. Now the next point is the wavelength of the photon. This is obviously being changes because it's depend upon the refractive index, so we can say that it is depending upon the wavelength. Wavelength is also going to be changed. Photons are the electrical neutral particle because photons जो होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता है. These are the intermediate particle. ये intermediate particle है having
शॉर्ट लाइफ टाइम होती है इनके पास, तो हम कह सकते हैं दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन्स में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन। फोटोन्स डिफ्रैक्शन पैटर्न भी शो करते हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर से पढ़ा है। Photons are not deviated by the magnetic and electric field, and the only reason is that it's a neutral particle. Photon जो होता है वो एक neutral particle है. It has neither having a positive charge nor has a negative charge, so cannot be restricted by the electric and magnetic field anyhow. Now moving to the next slide. Photoelectric effect, which is the basic and the important topic of the chapter. Coming to the name, photoelectric means the production of the electricity using photon. So when the photon reaches to the surface of a metal, it has this much amount of energy that it can extract the free electron from the surface of the metal. And as the electron is start moving, they would create a little amount of current to be flow, and this is called photocurrent. And this complete effect is called photoelectric effect. If we discuss about the figure, this is the figure which shows that this is a metallic plate and this is the radiation. This is the UV radiation which incident in the on the metallic plate. When the UV rays of suitable frequency incident on the metallic plate, it can eject out or emit electron from the surface of the metal plate, and these are called the photoelectron. If this photoelectron start moving, then it will create a small amount of current which is called photocurrent. This can't be happened with a visible light metal other than alkali metal. If you take metals other than alkali metal, then with the visible light this is not a possible phenomena. But if we apply the alkali metal with a visible light, photoelectron, there is a chances कि photoelectron develop हो सकते हैं and a little amount of photocurrent can be passed through. So first of all, the phenomena of the emission of electron from mainly metal surface exposed to light energy, that is X-ray, gamma rays, UV rays, visible and infrared rays. तो आपको ध्यान रखना है कि there is no radio wave and microwave. तो इन दो वेव्स को छोड़ के बाकी सभी के लिए photoelectric emission possible है. They have such energy that it can eject an electron from the surface of the metal. For its suitable frequency is known as photoelectric effect. It works for a particular frequency. Means उस frequency से अगर lower frequency की आप उसको radiation देंगे तो वो eject नहीं करता. तो आपको frequency का ध्यान रखना है. The next point is there. The electron emitted by this effect are called photoelectron. इस effect से जो electron eject होगा that is called photoelectron, and so the current developed is called photocurrent, photoelectric current. Note, non-metal also show photoelectric effect. Liquid and gases also show this effect, but to a limited extent. Non-metal can also show this, but there is some limitations that you have to follow before doing this activity. Now the next point is experimental setup to study the photoelectric effect. Actually, the photoelectric effect first discovered by the first सबसे पहले इसको जब डिस्कवरी हुई थी, then after that लेनार्ड जो था and Hertz उन्होंने इसको modify किया. Before that, it is a vacuum tube which is a large in large size में होती थी. It has two electrodes. One is behaving as a cathode, another is behaving as a anode. The anode one is behaving as a positive terminal and cathode is behaving as a negative terminal. And the connection is shown in the circuit here. Here, W is a window. W is a quartz window which allow the UV radiation or the UV light to comes and incident on the cathode plate. As the UV light of suitable frequency incident on the cathode surface or the cathode plate, it will start ejecting or emitting electrons, free electrons. That free electron will start moving from cathode terminal to anode terminal, and this would create development of the photoelectron or the photoelectric current. So the whole picture is there. Here the glass transmit only the visible and infrared light, but not the UV light. The glass, the quartz transmits UV ray light. When the light of suitable frequency falls on the metallic cathode, the photocurrents are emitted, photoelectrons are emitted, and these photoelectrons are
attracted toward the positive anode and the photoelectric current is constituted. Now, as the experiment is further observed by the Hertz and Lenard, observation of photoelectric effect, उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी जो उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को देख के सिग्निफाई किया था, एंड दीज आर देयर आर सम ऑफ देम आर लिस्टेड हियर. First of all, the effect of intensity of the incident light on the photoelectric current means the intensity of the light, which is just like हमने previous figure में देखा that UV rays are incident, तो उसकी intensity और उसमें कितना करंट डेवलप होगा उसके बीच में रिलेशन डेवलप किया गया. फॉर ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मींस अगर हम एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं, द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस linearly with increase in the intensity of the light. As we are going to increase the intensity of the light, the photo current is going to be increased linearly. So it is just obeying the Ohm's law. And if you look at this graph, then this graph shows the current in microampere actually. So microampere is a scale, आपको पता है microampere current का scale है, which shows a very feeble amount of current in the circuit, and there is luminosity on the x-axis. So this curve is linear curve and straight line. Now the next point is the effect of potential on the photoelectric current. Now this time what we are going to take the photoelectric current as a one variable and another as the potential of the battery. अब अगर हम पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल के चेंज होने से एनोड और कैथोड टर्मिनल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाउ दे आर बिहेविंग लाइक. फॉर ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, सपोज we have taken the light of a fixed frequency as it is coming, but this time keeping frequency as same, we are now going to change the battery terminal or by modifying the rheostat की हम position change करेंगे और उससे आपका potential change होगा. For a fixed frequency and the intensity of the incident light, the photoelectric current increases with increase in the positive potential applied to the anode. जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल को एनोड टर्मिनल पे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बढ़ेगा. When all the photoelectron reaches to the plate, the current become a maximum value and this is called the saturation current. Keep it remember, when all the photo current from the cathode plate reaches the positive plate or simply the anode plate, the current becomes at its maximum situation and this is called the saturation current or saturation point. When the applied voltage decrease, first time we have increased the potential at the anode terminal. Now this time we are decreasing. The current decreases but does not become zero at zero potential. Remember this point. Here the current is not going to be exactly zero when the potential is zero. It shows that even in the absence of accelerating potential, a few photoelectrons manage to reach the plate on their own due to their kinetic energy. After switching off the potential, the current is not going to be zero. It means कि यहाँ पे कुछ तो अभी आपके फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं which can manage to reach the plate by their own, जो अपने आप जाएंगे. This is not due to the potential difference. Now when the negative potential is applied to the plate anode with respect to cathode, अब हम negative potential applied कर गए anode plate पे with respect to cathode, the photoelectric current becomes zero at a particular value of the negative potential. This is called stopping potential. For this, we have the next graph that will show you how the photoelectric current varies with the negative potential. The negative potential is called the stopping potential or cutoff potential. When the potential is decreased, the current decreases but does not become zero at zero potential. The intensity of the incident light does not affect the stopping potential. Now we move to the effect of frequency of the incident light on the photoelectric current. For a fixed intensity of the incident light, the photoelectric current does not depend upon the frequency of the incident light because the photoelectric current simply depend upon the number of photons or the photoelectrons emitted and in turn on the number of photon incident.
Remember, when we discuss about the effect of frequency of the incident light to the photoelectric current, frequency का और photoelectric current का क्या रिलेशन होता है? फॉर ए फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर इंटेंसिटी वैरी करेंगे तो डिफरेंस आएगा, बट अगर हम इंटेंसिटी को सेम रखेंगे लाइट की द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिंपली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड एंड इन टर्न द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे इंसिडेंट होंगे और कितने आपके फोटोन सरफेस पे इंसिडेंट होंगे और उसके रेस्पेक्ट में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होंगे, ये केवल इसी पे डिपेंड करता है. इफ यू रिमेंबर द करंट इज नथिंग बट एन इंटू ई, आपने अगर ध्यान है तो आई इज इक्वल टू एन इंटू ई, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट शोज करंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द पार्टिकल एंड द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल. So the fourth point is there, the effect of frequency of the incident light on the stopping potential. Now this time frequency versus stopping potential we have to discuss. Effect of frequency of the incident light on the stopping potential for a fixed intensity of the incident light. This time keeping the intensity of the light as fixed, and the photoelectric current increases and is saturated with a increase in the positive potential. पॉजिटिव पोटेंशियल के बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक सैचुरेशन वैल्यू को अचीव कर जाएगा. मींस सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनोड टर्मिनल से कैथोड टर्मिनल से एनोड टर्मिनल पे ट्रांसफर हो जाएंगे. द पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई टू द एनोड, हाउएवर द सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, कीपिंग इंटेंसिटी है सेम. अगर मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी करता हूं तो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए सैचुरेशन पॉइंट सेम आएगा. फ्रीक्वेंसी चाहे मैं कितना भी वेरी कर लूं लेकिन उसका सैचुरेशन पॉइंट सेम है, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी सेम रखी थी, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी. व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज एंड टेकन बिलो टू द जीरो, अगर हम नेगेटिव सेशन की बात करें तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को धीमे धीमे डिक्रीज करते चले जाएंगे, सॉरी एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टेक द पोटेंशियल बिलो द जीरो, हम पोटेंशियल को धीमे धीमे ड्रॉप कर रहे हैं. द फोटो करंट इज डिक्रीजेस टू जीरो बट एट डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी 1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग आएगा, फ्रीक्वेंसी 2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी 1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी 2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आएगा. If you remember, this is the point Vs1 and Vs2 which shows the stopping potential for the frequency 1 and for the frequency 2. Higher the frequency, higher will be the stopping potential. This is the one point. Higher is the frequency, higher will be the stopping potential. Now the next slide is there. Threshold frequency. The graph between the stopping potential and the frequency does not pass through the origin. It shows that there is a minimum value of frequency called threshold frequency below which the photoelectric emission is not possible. However high the intensity of the incident light may be. Means कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नीचे आप नीचे जाने पे इंटेंसिटी को कितना भी हाई कर लो, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा जब तक इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी. So using all these graphs, we have calculated a formula which is called photoelectric equation. A photoelectric equation पे हम चलते हैं. Before going to that, there is certain law of photoelectric emission, and these are listed as 6 points. For a given substance, there is a minimum value of frequency of incident light called threshold frequency. It is a minimum frequency, and below which there is no photoelectric effect could be happen. The second point is there, the number of photoelectron emitted per second, that is photoelectric current, is directly proportional to the intensity of the incident radiation. Higher is the intensity of the incident radiation, greater will be the photoelectron emitted, and thus the photocurrent increases. The maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency, because energy is related to h mu. So
if mu is going to be increased, अगर frequency बढ़ाओगे तो energy अपने आप बढ़ जाएगी. The maximum kinetic energy of photon is independent on the intensity of the incident light. It is independent on the intensity. The process of photoelectric emission is instantaneous. ये instantaneous होती है. As soon as the photon of suitable frequency falls on the substance, it emits the photoelectron. The photoelectric emission is 1:1, means one photon then one photoelectron. So every photon के लिए एक suitable frequency, one electron is emitted, and this is 1:1. Now the next slide is to develop the relation of, simply called the formula of the photoelectric effect, a photoelectric equation. Einstein developed this relation. उसने जितना भी observation आया था उसको mathematical treatment दिया, and उसके लिए उसने एक formula develop किया. When a photon of frequency h mu falls on a metal surface, the energy of photon is absorbed by the electron and used in two ways. So when the incident light, when the light incident in the surface of the metal plate, the energy, the whole energy of the incident light, that is h mu, can be used by two methods. One is to overcome the overcoming from the orbit, like हम कहते हैं free electron है, free electron को एक minimum energy चाहिए, so that now it can be ejected. अब वो क्या करता है, अपने ऑर्बिट के अट्रैक्शन को छोड़ के बाहर निकलने के लिए मतलब कैपेबल हो जाएगा, एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इट नीडेड टू मूव आउट. तो हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द सरफेस बैरियर टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन. ये वर्क फंक्शन है उसके अट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि मेटल सरफेस में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है एंड आउटसाइड आपका इलेक्ट्रॉन है. देयर मस्ट बी एन इंटरेक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज. So to come out from that particular attraction, there must be some kind of energy that it should waste in that particular उस particular situation को overcome करने के लिए वो कुछ अपनी energy waste करेगा. So that is nothing but the work function, which is h mu naught. The remaining part of the energy is used in giving a velocity v to the emitted photoelectron, and this is equal to the maximum kinetic energy of the photoelectron. Remember, the remaining energy is used to give the velocity, which is called the maximum velocity, and this is given by the maximum kinetic energy equation. This is half mv square. So total energy is shifted into two parts. One is work function and another is maximum kinetic energy. So यहाँ पे हम energy conservation follow कर रहे हैं, and this is the energy of the incident photon, and this is the work function, this is the energy of the photoelectron. So this particular relation says that energy before and after emission is identical. H mu is equal to work function plus half of mv square. Keeping work function as h mu naught, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगी that says h mu minus mu naught is equal to half m v max square. इसी चीज को हमने यहाँ पे पिक्चराइज भी किया गया है इस पर्टिकुलर फिगर में. Now the next is verification of the law of photoelectric emission based on the Einstein photoelectric equation. Suppose now the frequency is less than threshold frequency. अगर आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस देन हुआ तो क्या आएगा रिजल्ट? If the frequency is less than the threshold frequency means you have a negative energy. अगर हम इक्वेशन को देखें और हम v को जो आपका म्यू है उसको लेस देन एज्यूम करते हैं म्यू नॉट से, then we get a negative value. That means energy is negative, which is not possible. Therefore, the photoelectric emission to take place, frequency of the incident light should be greater than the threshold point, threshold frequency. Since one photon emit one electron, 1 to 1 हमने पढ़ा था अभी, so the number of photoelectron emitted per second is directly proportional to the intensity of the incident light. It is clear that half mv square is proportional to frequency. जो आपकी जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होंगे उनका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से.
एज एच एंड म्यू नॉट आर कांस्टेंट, क्योंकि अगर देखेंगे इस फॉर्मूले में एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू नॉट जो है वो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो हम कह सकते हैं टोटल जो डिपेंडेंसी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर की किस पे होगी, फ्रीक्वेंसी पे होगी, जो कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। The next point is there, the photoelectric emission is due to the collision between the photon and electron. फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है कि कोलिजन होता है एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एंड एज सच देयर कैन नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट टाइम लैग्स। जैसे ही फोटोन आके स्ट्राइक होगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत वर्क पे आ जाएगा और तुरंत ही वहां से इमिट आउट हो जाएगा। बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन को हिट करने में, मतलब जब आपका फोटोन सरफेस को हिट करेगा और इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होगा, उस पर्टिकुलर टाइम्स के लिए आपका टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है, दिस इज लेस देन 10 to the power -8 सेकेंड। इतने कम टाइम के अंदर फोटोन सरफेस को इंसिडेंट करेगा और इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट कर देगा। सो देयर इज नो टाइम गैप और टाइम लैग। नाउ दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट: automatic fire alarm, automatic burglar alarm, scanner in television transmission, reproduction of sound in cinema films, in paper industry to measure the thickness of the paper, to locate the faults or the holes in the finished goods, in astronomy, to determine the opacity of the solid in the liquid, automatic switching of the street light to control the temperature of the furnace, photometry, it's a best application, photometry, beauty meter to measure the fair complexion of the skin, light meters used in cinema industry to check the light, photoelectric shorting, photo counting, and metrology. Now the next topic is dual nature of the radiation and matter. As the wave theory of EM radiation explains the phenomena of the interference, diffraction, and polarization. On the other hand, the quantum theory of the EM radiation successfully explains the photoelectric effect, Compton effect, black body radiation, X-ray spectra, and I think in the quantum theory this year you have to study only the photoelectric effect. रेदर देन कॉम्पटन, ब्लैक बॉडी एंड एक्सरे जो स्पेक्ट्रा है, ये टॉपिक आपको इस ईयर के लिए डिलीट कर दिए गए हैं। बट दीज ऑल टॉपिक्स कंक्लूड दैट कि जो आपका पार्टिकल है उसका क्वांटम, पार्टिकल की क्वांटम मतलब जो आपका एनर्जी है, ईएम रेडिएशन जो है उसकी क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। इसके अकॉर्डिंग कि जो आपकी रेडिएशन है वो एक पार्टिकल है, और जो अगर हम वेव थ्योरी को स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट इट एज अ वेव, हम उसको लाइट रेडिएशन या वेव की जैसे ट्रीट करते हैं। और जब हम बात करते हैं क्वांटम थ्योरी को, क्वांटम थ्योरी की, तो इसी चीज को हम एज ए पार्टिकल बिहेवियर एज्यूम करते हैं। Thus, the radiation have two nature or dual nature. One is wave nature, another is particle nature. Louis de Broglie, do you remember this name? Louis de Broglie suggested that the particle like electron, proton, and neutron. As we all know, electron, proton, and neutron are the subparticles of the atom, etc. have also dual nature. इन सभी का dual nature होता है. They also can have particle as well as a wave nature. Note, in no experiment matter exists both as particle and as a wave simultaneously. किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई भी पार्टिकल एक साथ डबल नेचर शो नहीं कर सकता, या तो वो एक टाइम पे पार्टिकल बिहेव करेगा या फिर वो एक टाइम पे वेव बिहेव कर सकता है। दोनों के दोनों नेचर वो एक साथ कर दे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, या अगर होगा भी तो हम उसको एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है। इन दिस इट इज आइदर द one or the other aspect. The two aspects are complementary of each other. Means या तो वो पार्टिकल नेचर करेगा या वेव नेचर करेगा, दोनों में से एक ही एक टाइम पे शो कर सकता है। Now the de Broglie suggestions was found based on the nature loves symmetry. First point is there, nature अपनी symmetry को loves करता है. Second is universe is made up of particle and radiation and both intensities must be symmetrical. Now moving to the next slide, this is de Broglie waves. According to de Broglie, a moving material particle. ध्यान दीजिएगा, हम नॉर्मली पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे हैं मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स कैन बी एसोसिएट
with a wave, and that is the wave can guide the motion of the particle. क्योंकि पार्टिकल जो है वो मटेरियल वेव के साथ साथ मूव कर रहा है, तो वेव क्या कर सकती है, उस पार्टिकल को गाइड कर सकती है. द मोशन ऑफ द पार्टिकल, द वेव एसोसिएट विद ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज नोन एज डी ब्रोगली वेव और द मेटा वेव. मीन्स कि मूविंग पार्टिकल के साथ साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको हम कहते हैं मेटर वेव या मटेरियल वेव, और समटाइम दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव. Now this is the expression of de Broglie wave according to the quantum theory. The energy of the photon. Now this time we are treating it as a particle. तो हम particle और wave दो nature को mix up करेंगे यहाँ पे. According to quantum theory, the energy of photon is h mu, जो कि हमने wave theory में पढ़ा भी था, and this is equal to hc divided by lambda. According to Einstein theory, the energy of particle is given by E is equal to mc square. And using these two relation, we can relate a relation between the wavelength to the mass of the particle or the mass of the photons. तो आप यहाँ पे एक relation develop कर सकते हैं, lambda is equal to h divided by mc और lambda is equal to h divided by p, where lambda is the wavelength of the wave, wavelength of the material wave, and p is the momentum and h is a Planck's constant. So this is the relation how that wavelength of the material wave is related with momentum. So आप देख सकते हैं, if instead of photon we use a material particle of mass m moving with a velocity v, then the equation becomes lambda is equal to h divided by mv. अगर कोई जो पार्टिकल आप यूज कर रहे हैं वो आपका फोटोन पार्टिकल नहीं है, क्योंकि फोटोन पार्टिकल जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, सो वी विल यूज द वैल्यू सी है. लेकिन अगर फोटोन पार्टिकल नहीं है, वो फोटोन पार्टिकल के अलावा है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या कोई भी दूसरा पार्टिकल है, तो हमें उस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे ट्रीट करनी पड़ेगी, which is the expression of de Broglie wavelength. Remember, one question maybe comes from this point. Now the conclusion is there, de Broglie wavelength is equal to h divided by m into velocity. The de Broglie wavelength is inversely related to the mass and the velocity of the particle. यहाँ पे वेलोसिटी एक बहुत अच्छा फैक्टर है, बिकॉज मास कैन बी चेंज. मास तो अगर पार्टिकल चेंज करोगे तो ही चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं है. बट वेलोसिटी इज द ओनली फैक्टर जो कि यहाँ पे रिलेट कर रहा है वेवलेंथ के साथ. सो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. इफ द पार्टिकल मूव फास्टर देन द वेवलेंथ विल बी स्मॉलर एंड द वाइस वर्सा. इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट मींस वेलोसिटी इज 0, द वेवलेंथ इज इनफाइनाइट. बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो गया है तो आपका लैम्डा इनफाइनाइट आएगा. सच अ वेव कैन नॉट बी विजुअलाइज. ऐसी वेव को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते. द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल. मींस हैवियर इज द पार्टिकल, लाइटर विल बी द. जितना पार्टिकल को हैवी करोगे उतना ही आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी. The de Broglie wavelength is independent on the charge of the particle. जिसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप अल्फा पार्टिकल ले ले, चाहे आप इलेक्ट्रॉन ले ले, या कोई भी पार्टिकल आप ले सकते हैं, सबके लिए इसका नेचर इंडिपेंडेंट होता है नेचर पे, पार्टिकल पे. लैम्डा का नेचर से कोई रिलेशन नहीं है. मैटर वेव लाइक EM वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड हेंस दे कैन नॉट मैकेनिकल वेव. जो मैटर वेव होती है वो आपकी EM वेव है एंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, and hence they are not mechanical wave. Matter waves are not electromagnetic wave because they do not produce accelerated charge. Matter waves are probability waves, amplitude of which give the probability of the existence of particle at that point. With this last slide, I'm going to finish this PPT now. Thank you.